post-graduation. Today, Rao sir will tell us what is the procedure of obtaining degree through Swayam. To start with the program, I request Maitre sir to focus light on today's program. Maitre sir. Am I audible? Yes, Am I sir. audible? Yes, sir. Right. Okay. Thank you, madam. Thank you, Raut sir. Thank you, Kane madam, for joining this particular platform. And this particular platform is one of the platform जहाँ पे स्वयं जैसा ही कुछ होने वाला है. एंड व्हेन वी से स्वयं, तो स्वयं का एक बहुत बड़ा लॉन्ग फॉर्म है जो शायद सर हमको बताएंगे. बट मुद्दे की बात यह है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में भी बोला गया है कि कुछ कंपोनेंट जो है वो बच्चों ने खुद सीखना है, आत्मनिर्भर होना है. और इसके पीछे के दो चार लॉजिक है वो मैं बताने की कोशिश करता हूँ, और बाकी स्वयं क्या है वो तो आज के रिसोर्स पर्सन हमें बताएंगे. पहली चीज कि टीचर्स की कमी हो रही है और टीचर्स की क्वालिटी अक्रॉस कंट्री सेम नहीं है. तो कुछ ऐसे गिनी चुने इंस्टीट्यूशंस है जिसको हम बोलते हैं इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस, जहाँ पे हमने पाया है कि वहाँ के टीचर की क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है. द वे दे डिलीवर देयर कंटेंट एंड द कंटेंट इटसेल्फ, ये दोनों बहुत बढ़िया होते हैं. और ऐसा पाया गया है कि जो भी दूर दराज के एरिया में रहता हो, नागपुर जैसे सिटी में रहता हो, लेकिन जिसको एक्सेस चाहिए उस टीचिंग का और उसको लर्न करना है वहां से, तो उसको एक ऑप्शन मिलना चाहिए, उसको एक प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए. इस हिसाब से उस प्लेटफॉर्म का निर्माण किया गया है, जहाँ पे ये बताया गया कि आप कहीं से भी कोई भी कोर्स ऑफर कर रहा है और वो भी प्रोमिनेंट इंस्टीट्यूट्स ऑफ इंडिया से, तो कहीं का भी बच्चा उस कोर्स को कर सके. और आगे जाके फिर वो कोर्स करेगा तो उसको इंसेंटिव क्या मिलेगा, और ये तो हम उस प्रोसेस में है अभी कि वहां पे पाए गए क्रेडिट, उसकी एग्जाम होती है और उसके उसके पाए गए क्रेडिट्स को हम हमारे मार्क लिस्ट में भी देख पाएंगे. यहाँ तक के वो प्रोसेस हम कर रहे हैं, वी आर इन द प्रोसेस. बट उसके अलावा भी अगर मुझे एग्जाम नहीं देने की है, मुझे सर्टिफिकेट नहीं चाहिए है, लेकिन फिर भी मुझे सीखना है, लर्निंग के ऊपर कोई पाबंदी नहीं है, और मुझे मेरे एनवायरनमेंट में मेरे पेस से सीखने का है, मेरे स्पीड से सीखने का है, तो क्या मैं अपना मोबाइल फोन या लैपटॉप या डेस्कटॉप यूज करके वो सीख सकता हूँ, कोई भी कोर्स ज्वाइन कर सकता हूँ? आंसर टू दिस इज स्वयं. तो स्वयं एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे बच्चा अपने मर्जी से कोर्स सिलेक्ट कर सकता है और अपने मर्जी से अपने स्पीड से उसको पढ़ सकता है. फिर चाहे एग्जाम देना नहीं देना वो उसकी मर्जी है. तो मेरे हिसाब से ये एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें मे बी साइंस का स्टूडेंट म्यूजिक सीख सकता है. सो दैट सिंपली मीन्स दिस इज गोइंग टुवर्ड्स द न्यू एजुकेशन पॉलिसी, जहाँ पे सीखने पे और क्या सीखेगा बच्चा उसका कोई सेट नहीं रहेगा. वो अपने हिसाब से तय कर पाएगा, अपने 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 हिसाब से वो निर्धारण करेगा कि मैंने क्या सीखने का है. और उस हिसाब से हमारी सिस्टम, ओवरऑल इंडियन सिस्टम ऑफ एजुकेशन डेवलप होने जा रही है या हो रही है. कोरोना से उसको डेंट आया, लेकिन कोरोना ने हमको एक पॉजिटिव चीज भी दी है कि हम आज इस प्लेटफॉर्म का बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर रहे हैं. शायद कोरोना नहीं रहता तो हम ये 5-10 साल तक और नहीं करते थे या नहीं कर पाते थे. तो मेरे हिसाब से ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है और उसका हमने फायदा उठाना चाहिए. So without wasting time, I will say that whatever I wanted to say, I have finished. Over to you, madam. So, let me introduce you to a resource person of today's program. We have with us Dr. Amol Raut. Sir is head of Department of English at Yashodas Girls Arts and Commerce College, Nagpur. He has also worked with PNIT Nagpur and Punjab Rao Deshmukh Agriculture College. Sir is recognized PhD guide of RTM Nagpur University, and 2 students have been awarded PhD under his supervision, and 5 students have submitted thesis under his supervision. Sir is member of Board of Studies of Foreign Languages in RTM Nagpur University, Gondwana University, and Kavi Kulguru Kalidas University. Sir, I request you to take this over. Amol sir. Thank you, madam. Thank you, Mitra sir. Let me share my PPT first. बोल सर, थोडासा कॅमेरा ऍडजस्ट करा, तुमचा चेहरा नाही दिसत. Okay.
Just a moment. Now it is okay, sir. Now it is okay. Okay. Thank you. Am I audible now? Yes, sir. Yes, sir. Thank you. Thank you, Professor Maitre, sir, principal of this college, Devani Madam, librarian of this institute, and good afternoon to one and all. ये जो स्वयं यूजीसी द्वारा निर्गमित स्वयं के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं, पर उसके ऊपर जाने से पहले मैं शुरुआत करना चाहूंगा डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के इन पंक्तियों के साथ। तो स्टूडेंट्स, आप मेरा स्क्रीन देख सक रहे हैं सभी लोग? Yes, sir. थैंक यू सर। इंतजार करने वाले को इतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। स्टूडेंट्स देखिए, लाइंस की तरफ ध्यान दीजिए। इंतजार करने वाले को इतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। जी हाँ, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने कहा है, इंतजार करने वाले को उतना ही मिलता है। तो इंतजार करते रहोगे तो जो चीज मिलनी है वो इंतजार में ही गुजर जाएगी, तो जो कोशिश करेंगे उसको जरूर हासिल होगा। तो ये हर जगह लागू होता है। माय डियर स्टूडेंट्स, इन अल्फाज के साथ, इन लाइनों के साथ, इन पंक्तियों के साथ हम अपना आज का जो लेक्चर है और कॉलेज ने जो मुझे इसके ऊपर बोलने के लिए दिया है वो मैं शुरू करता हूँ। आप पहले स्क्रीन देख रहे हो। मैं स्टूडेंट से रेस्पॉन्स चाहूंगा, प्लीज। स्टूडेंट से, जो भी स्टूडेंट से रेस्पॉन्स देना चाहे प्लीज, क्योंकि स्टूडेंट्स का रेस्पॉन्स रहेगा तो इट कैन बी अ टू वे कम्युनिकेशन। अदरवाइज आई वोंट बी एबल फीलिंग कंफर्टेबल कि बात क्या हो रहा है, उधर स्टूडेंट सुन रहा है कि नहीं। तो आई रिक्वेस्ट पार्टिसिपेंट्स जो भी ज्वाइन हुए तो थोड़ा सा प्लीज, और पर्टिकुलरली स्टूडेंट्स को बोलूंगा मैं कि वो मेरे ऊपर थोड़ा सा जो मैं कह रहा हूँ उसको रिप्लाई देते जाए। तो आप स्क्रीन देख सकते हैं स्टूडेंट्स? कोई स्टूडेंट जवाब देगा प्लीज? यस सर, ठीक है। व्हाट्स योर गुड नेम बेटा? क्या नाम पता है आपका? प्रिया उमाठे। प्रिया। प्रिया, ये जो आप स्क्रीन देख रहे हैं यहाँ पे कुछ लिखा है, एक्टिव, यंग, एस्पायरिंग माइंड्स, सेल्फ लर्निंग। ठीक है। जब तक प्रिया इसके ऊपर कुछ बोलती है, बाकी स्टूडेंट्स भी विचार करेंगे इस पे से क्या समझते हैं आप। मैं कोई भी क्वेश्चन का जवाब नहीं पूछ रहा हूँ यहाँ पे। स्टूडेंट्स प्लीज ध्यान दीजिएगा, मैं कोई भी क्वेश्चंस के आपको आंसर नहीं पूछ रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि हम क्या सोचते हैं, यदि हमारे सामने कुछ चीज आ जाती है तो उसके ऊपर हम क्या सोचते हैं ये जानना चाहता हूँ आप लोगों से। तो जैसा कि अभी हमने प्रिया की आवाज सुनी। प्रिया, आप बताएंगे आप क्या सोचते हैं ये चित्र को देखने के बाद, ये स्लाइड को देखने के बाद जो स्क्रीन पे दिखा जा रहा है? यस प्रिया, या कोई स्टूडेंट बोलेगा? सोचिए थोड़ा सा और बताइए कि ये आप जो देख रहे हैं स्क्रीन पे, इसके ऊपर से आप क्या सोचते हैं? स्टूडेंट्स प्लीज रिप्लाई। हेलो, हेलो स्टूडेंट्स, रिप्लाई प्लीज। आई कांट हियर योर वॉइस। अमोल सर। हाँ यस, कोई बोलना चाह रहा है, प्लीज बोलिए। हेलो। जो स्टूडेंट्स यस, स्कूल पे नहीं है लेकिन यूट्यूब पे है, वो आपको जवाब नहीं दे पाएंगे। अगर वो उनको जवाब देना है तो उनको चैट बॉक्स में लिखना होगा। ओके 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 ओके, चलेगा चलेगा चलेगा, बट एटलीस्ट दे कैन रिस्पॉन्ड टू माय थिंग्स व्हाट आई वांट टू से। ठीक है, तो नो इशू एज सच, बट आई जस्ट वांट टू कंफर्म वेदर इट इज कैन एनीबॉडी जस्ट, मैडम यदि वहां पे है मेहरबानी मैडम, तो आप प्लीज थोड़ा सा ज्वाइन रहिएगा साथ में बीच बीच में, क्योंकि
sometimes what happen, ये gadgets का कोई खरा नहीं, कुछ कम ज्यादा हो जाता है, we will not be knowing. Anyways, so this is, there are 4 words we can see. So let us start with the self one. तो हम यदि ये बात करते हैं इसकी, तो आप देखोगे स्टूडेंट्स कि यहाँ पे ये जो दिया गया है, सॉरी, सेल्फ वर्ड आप देख सकते हैं सभी लोग, ये सेल्फ वर्ड है और यहाँ पे एक्टिव है, यहाँ लर्निंग वाला एक फैक्टर है और यहाँ पे यंग एस्पायरिंग माइंड्स बोला गया है। तो सेल्फ यानी मैं इसको जानबूझ के मैंने हाईलाइट किया कि आप इस जगह पे यदि खड़े हैं तो आपको ये पहले आप इधर जाना चाहोगे या आप इधर जाना चाहोगे, या फिर आपकी अभी पोजीशंस क्या रहेगी। तो जैसा कि लास्ट टाइम एक स्टूडेंट ने बड़ा अच्छा जवाब दिया था कि सर मुझे, मैं इधर से भी शुरुआत करता हूँ और ऐसा आता हूँ तो भी मैं यहीं पे आ जाता हूँ, या मैं इधर से भी ऐसा जाके भी शुरुआत करता हूँ तो मैं इसी जगह पे आ जाता हूँ। यानी हमारे बीच में जो है वो एक स्टार है, हमें क्या करना है, हमें क्या अचीव करना है, वो अचीव करने के लिए हमें, यदि हम इस ओर जाते हैं तो हम अभी के स्थिति में जो हम बात कर रहे हैं, ये जो वर्ड है, ये जो यंग एस्पायरिंग माइंड, यंग एस्पायरिंग माइंड का मतलब क्या होता है कि जो स्टूडेंट्स है, आज के दौर के जो स्टूडेंट्स है क्लासरूम में जो पढ़ते हैं, वो स्टूडेंट्स जो एम रखना चाहते हैं, उनके दिमाग में कुछ एम है, वो एम को हासिल करने के लिए यदि वो इस स्थिति पे है तो वो एक्टिव ही रहना चाहिए। यदि स्टूडेंट एक्टिव नहीं है तो दैट लर्निंग हैज नो मीनिंग एट ऑल। बिल्कुल भी बुकिश लैंग्वेज जो हम बोलते हैं कि बुकिश से यदि चलता है कि बात पढ़ लिया और एग्जाम दे दिया, पास आउट हो गए, वो डिग्रियां जो हम लेंगे, वो डिग्री में से हमने क्या सीखा, हमको जो मार्केट, जॉब मार्केट में जो मांगते हैं वो नॉलेज यदि हमारे पास नहीं रहा, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट। कंपनियां आई है, मान लीजिए फॉर एग्जांपल, उस कंपनी को यदि हम फेस करते हैं तो वहां जाने के लिए जो हमें लगता है वो हमारा सबसे पहला ये वर्ड होता है एक्टिव, ये है लर्निंग, ये है यंग एस्पायरिंग माइंड्स जो है आज की स्थिति में आप लोगों। तो स्टूडेंट्स, ये था एक छोटा सा एग्जाम्पल जहां पे मैं आपको यहाँ से जोड़ने की कोशिश कर रहा था, इसलिए मैंने आपको ये दिया था। तो याद रखिएगा, आप कहीं से भी शुरुआत करो पर आपको शुरुआत करनी है। इसीलिए डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का ये जो है सेंटेंस, ये बखूबा यहाँ पे लागू होता है कि इंतजार करने वाले को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। तो कोशिश ही नहीं करोगे तो यू वोंट गेट एनीथिंग। सो अभी यहाँ पे एक पिक्चर है स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं, मैच द पिक्चर एंड द वर्ड। पहला पिक्चर है जो इससे रिलेटेड करता है, सेकंड पिक्चर है, कोई शायद जवाब दे पाएगा तो बताइएगा प्लीज। ये साइन इटसेल्फ सेज दैट इट्स फाइन। बाद में ये है सिक है, हैप्पी है, स्लीपी है, ये आप समझ सकते हैं यहाँ से कि दिस रिलेट्स टू दिस वन। अनदर वन इज सैड, फाइन, हैप्पी। सो दिस फ्रॉम दिस इट सीम्स दैट इट्स हैप्पी। यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे क्या हो रहा है, स्लीपी है फिर से। यहाँ पे भी आपने देखा, ये दोनों सिचुएशंस में हम लोग यहाँ पे भी स्लीपी बोलेंगे, यहाँ पे भी स्लीपी बोलेंगे, डिपेंड्स करता है। कुछ स्टूडेंट्स ने कहा था लास्ट इसमें कि ये स्लीपी है सर, नहीं सर ये स्लीपी है। दिस इज द पोजीशन ऑफ स्लीपी। सो माय डियर स्टूडेंट्स, कि हम जब जवाब देना शुरू कर जाते हैं उस समय ये हो जाता है कि अरे मैंने तो यहाँ स्लीपी बोला था। इसका मतलब क्या है, हमें रुकना भी है, कहीं ना कहीं हमें रुकना है, हमें घाई करना नहीं है सीखते समय। ये रहा आखिरी वाला, सैड, हैंग्री, हैप्पी। तो ये एक आपको जस्ट कनेक्ट करने के लिए मैंने स्लाइड्स चालू किया था। नाउ मूविंग टू द यूजीसी। आज का जो टॉपिक है, इस विषय पे जो अपन आज बोल रहे हैं स्टूडेंट्स, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। इसका शॉर्ट फॉर्म काफी एक्रोनिम से ही चलता है, यूजीसी। यूजीसी मतलब विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। आप स्क्रीन देख सकते हैं, स्क्रीन पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये वेबसाइट है जिसको हम यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन से जानते हैं। और स्टूडेंट्स को ये मालूम होना बहुत जरूरी है, बहुत स्टूडेंट्स को यूजीसी का फुल फॉर्म नहीं मालूम होता, इसलिए मैंने इसको एक्रोनिम के नाम से आपको बताया कि एब्रिविएशंस जो होते हैं यूजीसी जिसको हम बोलते हैं, ये है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स की ये आज का जो टॉपिक है स्वयं, जिसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। और उससे जानने के लिए हमें सबसे पहले इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के वेबसाइट पे जाना जरूरी है, क्योंकि वो ये जो है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा एक पार्लियामेंट के एक्ट के द्वारा यूजीसी का फॉर्मेशन हुआ। और इस वेबसाइट पे पहले हम चलते हैं और आपको आगे की जानकारी देते हैं कि जिस टॉपिक रिलेटेड है। आप लोग स्क्रीन शेयर हो रहा, आई होप की स्क्रीन इज वर्किंग नाउ। सो दिस इज द यूजीसी वेबसाइट नाउ। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, ये सारी चीजें यहाँ पे दी है और कोई आज के दौर में मुश्किल नहीं है। बखूबा डिपेंड करता है कि कितने स्टूडेंट्स यूज टू हो रहे हैं या फिर होंगे, जरूर होंगे, टाइम है और इस टाइम में ही वो आगे बढ़ेंगे। तो मैं हल्का सा स्लाइड करता हूँ, ड्रॉप डाउन करता हूँ इस चीज को,
ये जो वेबसाइट है जिसका मैंने कहा यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, ये बताना इसलिए चाह रहा हूँ स्टूडेंट्स, सारा का सारा बेस जो है ये इसके ऊपर आधारित है। तो आप देखोगे स्टूडेंट्स ये जो यूजीसी का जो वेबसाइट है जिसको मैंने कहा यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, ये इसका जो रोल है, ये रोल आप देख सकते हैं कि it determines what determines, it determines the maintenance of standards of teaching, the examinations and everything। तो ये पूरा होल्ड करता है। आप देख सकते हैं कि इसके बारे में भी काफी जानकारी बाकी स्लाइड से, we will not go into in detail in all this because हमारा जो टॉपिक है उससे हम रिलेटेड हम उसी के ऊपर चर्चा करेंगे। कहने का मतलब था कि ये जो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के तहत इसको जो फॉर्मुलेट किया गया और एक्सेप्ट किया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, वो इसलिए कि कोऑर्डिनेशन है इस यूजीसी के साथ, डिटर्मिनेशन के साथ, मेंटेनेंस ऑफ स्टैंडर्ड्स जो है यूनिवर्सिटी एजुकेशन के लिए, वो यहाँ से रूल्ड होगी। ना हम चलते हैं हमारे मेन जो टॉपिक है उसके ऊपर, तो वो स्वयं है। आप देख सकते हैं वेबसाइट, यहाँ पे मैं ड्रॉप डाउन कर रहा हूँ हल्का सा, यहाँ पे हम आएंगे, यहाँ पे आप देखेंगे स्टूडेंट्स काफी नोटिस वगैरह चलते रहते हैं, जो आपके कॉलेज की भी वेबसाइट पे काफी अच्छी वेबसाइट है आपके कॉलेज की, वहाँ पे भी आपको इस तरीके का नोटिफिकेशन आता है। हालांकि डिपेंड करता है कि ये किस तरीके से नेट कनेक्शन से थोड़ा सा स्लो चल रहा है, बट धीरे धीरे इट विल कम अप। लाइक यहाँ पे बाकी चीजें स्टूडेंट्स, जैसे कोई क्वेश्चंस आपको पूछना हो तो उसके जवाब भी दिए जाते हैं। बाद में यहाँ पे काफी अलग चीजें, इवेंट है, आरटीआई भी सबको मालूम है, यहाँ पे जॉब्स के बारे में इंफॉर्मेशन रहती है, ये ऑर्गेनाइजेशन है, यूजीसी ब्यूरोस है, यूनिवर्सिटीज, सारी चीजें इस पोर्टल पे अवेलेबल है। तो थोड़ा स्लो है, विल रीलोड इट, प्लीज होल्ड इट। ये नोटिसेस है, इस नोटिसेस में आपको सारी जानकारी मिलेगी, जो भी नोटिसेस लेटेस्ट अपलोड होते हैं। ये दूसरा यूजीसी हेल्पलाइन नंबर है, और कोविड के चलते गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस वेबसाइट पे भी ये सारी चीजें दे रखी है। ये स्कीम्स है यूजीसी की, ये स्कीम्स कॉर्नर, स्टूडेंट्स के लिए एक कॉर्नर यहाँ पे रखा गया है, जो भी चीजें स्टूडेंट्स देख सकते हैं। यहाँ स्कॉलरशिप, फेलोशिप के लिए भी, इंटरनेशनल कोऑपरेशन के तहत काफी चीजें यहाँ पे आती हैं, जो कोर्सेज के अंतर्गत स्टूडेंट्स रिसर्च यदि करना चाहते हैं स्टूडेंट्स, तो दैट इज ऑल्सो हेल्पफुल। बाद में आता है एंटी रैगिंग के ऊपर, यहाँ पे काफी सजेस्टिव अवेयरनेस वाले की चीजें यहाँ पे आपको मिलेंगी। और जो आज का हमारा मेन था उसके ऊपर हम पहुंच गए हैं, और ये रहा डिजिटल इनिशिएटिव्स। डिजिटल इनिशिएटिव्स में आप यहाँ देख पा रहे हैं स्वयं, यूजीसी मुक्त, ई पाठशाला और ये स्वयं प्रभा, ये दो रिलेटेड है गवर्नमेंट ऑफिसेस, जिसको हम डिस्कस यहाँ पे नहीं करेंगे। आज के हमारे ये इश्यूज है जिसको हम बोलेंगे, मेन इशू ये है। तो ये बाकी चीजें हम इसको थोड़ा सा आपको और नॉलेज दे देंगे। पहले हम बात कर रहे हैं स्वयं। तो इस स्वयं को यहाँ पे मैंने आपको वेबसाइट पे इसलिए लेके गया स्टूडेंट्स कि आपको वेबसाइट मालूम होनी चाहिए, और आप डायरेक्टली भी इसको क्लिक करके आगे की प्रोसेस कर सकते हैं। सो दिस वाज व्हाट अबाउट यूजीसी। नाउ विल मूव टू अवर पीपीटी। आइए हम पीपीटी की ओर चलते हैं। हमारा जो पीपीटी है वहां पे हम थे, इज इट विजिबल? तो देखिए स्वयं, स्वयं का ये गवर्नमेंट का आपको दिया गया यूआरएल, यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो यू कैन बी टेकन डायरेक्टली टू द swayam.government.in की तरफ। अब स्वयं जो शब्द है SWAYAM, जैसा कि हमारे प्रिंसिपल साहब ने कहा, स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स, यानी ये यूजीसी के रेगुलेशंस 2021 का है। और यहाँ पे मैं जरूर कहूंगा कि आपका कॉलेज ये अभी रिसेंटली पहला होगा मेरे नॉलेज से हिसाब से, जिन्होंने इमीडिएटली इनिशिएटिव लिया और रेगुलेशंस जो नए आए हैं, और जिसके तहत जैसा कि प्रिंसिपल साहब ने भी दोहराया था इस बात से कि वी आर वर्किंग ऑन इट, क्योंकि वो प्रोसेस है। इस रेगुलेशंस को एक्सेप्ट करने के बाद विद्यापीठ से और कॉलेज से जो प्रोसेस करना है वो एक प्रोसेस है। बट आपके कॉलेज ने ये स्वयं के ऊपर जो इमीडिएट यहाँ पे रखा गया है,
अपना लेक्चर स्वयं के ऊपर, ये जानकारी आपको एडवांस में मिल रही है। तो स्टूडेंट्स देखिए, आप स्वयं का स्पेलिंग जो है SWAYAM, स्वयं, स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स। अब ये इंडिया नेशनल मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स है। ये जो प्लेटफॉर्म है स्वयं का, ये मुक्स का प्लेटफॉर्म है। मुक्स का मतलब होता है स्टूडेंट्स, M स्टैंड्स फॉर मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। ये डिजाइन किया गया है 3 बेसिक प्रिंसिपल्स, जो अपने भारत की एजुकेशन पॉलिसी है उसके 3 बेसिक प्रिंसिपल्स के ऊपर डिजाइन किया गया है। एक्सेस, जो अभी अपन एक्सेस कर सकते हैं इजीली, इक्विटी, देयर विल नॉट बी एनी सॉर्ट ऑफ डिफरेंसेस, जस्टिस मिलेगा सभी को, एंड क्वालिटी। तो ये 3 बेसिक चीजों के ऊपर, प्रिंसिपल्स के ऊपर, चीफ अपन कहेंगे, इन चीजों के ऊपर इंडियन एजुकेशन पॉलिसी जो है वो एक्सेस, इक्विटी एंड क्वालिटी। अब इस यूजीसी ने स्वयं के तहत नेशनल कोऑर्डिनेटर्स अपॉइंट किए हैं पीजी कोर्सेज के लिए, जिन्होंने स्वयं प्लेटफॉर्म के लिए कोर्सेज डिजाइन किए हैं। यूजीसी यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ने अभी यूजीसी रेगुलेशन 2021 को नोटिफाई किया है, नोटिफाइड इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। क्रेडिट फ्रेमवर्क फॉर ऑनलाइन लर्निंग कोर्सेज थ्रू स्वयं, और आज की ये गरज भी हो गई है, ये जो सिचुएशन है, ये पैंडेमिक सिचुएशन है स्टूडेंट्स, इसके तहत ये जरूरी हो गया कि ये रेगुलेशंस जो अभी आए हैं, ये अपने को आज न कल जो एक्सेप्ट करने थे वो अभी एक्सेप्ट करने ही पड़ेंगे। इट इज अ प्रोसेस, इट विल टेक टाइम, बट हमें तैयार रहना है। इसलिए मेरी जो स्टार्टिंग के सेकंड और थर्ड स्लाइड्स थे उसी के लिए था कि आपको मैं स्टार्टिंग में इसीलिए बताना चाह रहा था कि नाउ इट इज टाइम टू स्टार्ट, इट इज टाइम टू बी एक्टिव, इट इज टाइम दैट वी आर लर्निंग, बट we need that we, the young aspiring students, should aim for their future life, not only getting undergraduate degrees, but should have the extra skills. That extra skills means this is what we are talking about today, that is स्वयं। So students, कहने का मतलब है कि ये स्वयं के तहत जो नोटिफाई किया गया है इस गैजेट में, काफी जानकारी है, उसके आगे हम बात करेंगे। ये फैसिलिटेट करता है इंस्टीट्यूशंस को कि 40% ऑफ टोटल कोर्सेज जो है वो ऑफर किए जाए सेमिस्टर के बीच, और वो भी ऑनलाइन लर्निंग कोर्स रहेगा। ये टोटली ऑनलाइन लर्निंग कोर्स है। वो कैसा है, क्या है, किस तरीके से प्रोग्राम चलता है, वो सारे हम अभी आज देखने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, एक नोट रेगुलेशन आया है 7 पेजेस टू 7 पॉइंट्स का है, वो अपन डिस्कस करेंगे थोड़ी देर में। अभी हम बात करते हैं यूजीसी ने जो पब्लिश किया है 28 रिसेंटली, इसलिए मैंने इस इंस्टीट्यूशन का नाम इसीलिए लिया, श्रीमती बिंजानिया सिटी महाविद्यालय का, कि आपका इंस्टीट्यूट है जो इन्होंने इस सिचुएशन में भी ये लेक्चर रखा है। ये आपका शायद पहला इंस्टीट्यूट होगा कि इमीडिएटली इस पैंडेमिक सिचुएशन में आए हुए रेगुलेशंस के ऊपर जो छोटी सी चर्चा अपने स्टूडेंट्स के लिए रखी और अपने कुछ लोगों के लिए रखी, वो फायदेमंद है। तो देखिए स्टूडेंट्स, यानी ये पता चलता है कि कितने क्रिएटिविटी भरी है, कितने इनिशिएटिव्स हैं, और हम लोग कितने अवेयर है इन चीजों से। तो स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं कि यूजी के कितने कोर्सेस हैं, 83, पीजी के 40। स्वयं मुक्स टू बी ऑफर्ड सेमेस्टर जुलाई अक्टूबर 2021, उनका एक नोटिफाइड रेगुलेशंस के माध्यम से ये भी हमको यूजीसी ने बता दिया है कि सेमेस्टर जुलाई जो है, सेमेस्टर पैटर्न में जुलाई से लेके अक्टूबर जो है वो 2020 के बीच ही रहेगा। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स की इसका एक नोटिफाइड हुआ है। there may be a change, there may be a we can say there can be another notification of dates because of this second wave, I can say. So we should not get panic of all this. So like हम बात करेंगे अभी 3E की। 3E की मैंने हमें जो इस नोटिफिकेशन के द्वारा, इस रेगुलेशंस के द्वारा गवर्नमेंट ने जो बातें बताई उसके ऊपर हम ध्यान देते हैं। अब वो कह रहे हैं कि ये जो सिचुएशन है, प्रेजेंट सिचुएशन है वो ऐसी है स्टूडेंट्स कि हमने ये देखा है कि आज का जो सिचुएशन है वो कोरोना वायरस पैंडेमिक सिचुएशन है। हम पिछले साल से देख पा रहे हैं, 1 साल, अभी ये सेकंड ईयर अपना चल रहा है, सेकंड साल कंप्लीट हो चुका है, और ये जो ग्रिप पड़ के रखी है कोरोना वायरस पैंडेमिक में मार्च 20 से, तो ये 21 मार्च अभी हो चुका है। तो ऐसे स्थिति में जो सेकंड वेव आया है, ये पूरी तरह से हमारे हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को उन्होंने पूरी तरह से बंद करवा दिया है, जो कि ब्लैक बोर्ड लर्निंग हम कहते हैं। इस ब्लैक बोर्ड लर्निंग की जब हम बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स, तो हमने देखा है कि यहाँ पे जो सिचुएशन जो हमने देखी पैंडेमिक सिचुएशन,
तो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो ऑनलाइन एजुकेशन आज के तारीख में आपको दिया जा रहा है, वो ऑनलाइन एजुकेशन जो है वो मोबाइल से आपके घर पे आप अपने लैपटॉप यदि है तो लैपटॉप यूज कर रहे होंगे डेफिनेटली, या फिर अपने कंप्यूटर्स पे भी यूज कर रहे होंगे। स्टूडेंट्स, मेरा कहना ये है कि ये जो लर्निंग प्रोसेस ये कभी रुकती नहीं, इट इज नेवर एंडिंग प्रोसेस। यूजीसी ने अपने रेगुलेशंस में यही कहा है कि इट इज नॉन स्टॉप, नेवर एंडिंग प्रोसेस एंड इट विल नॉट बी स्टॉप। फिर वो स्टूडेंट्स कोई भी स्थिति में रहे, आपने देखा होगा यूनिवर्सिटी से भी अपने काफी डिरेक्शन्स आते गए की एक भी बच्चा एक्झामापासून वंचित राहिला नाही पाहिजे, परीक्षेपासून वंचित राहिला नाही पाहिजे। तो परीक्षेपासून वंचित राहिला नहीं पाहिजे जिसको बोला गया है, उसी तरीके से हमें स्टूडेंट्स को जो एनकरेज करना है, किस लिए एनकरेज करना है, टू एनरोल करना है इस कोर्सेज के लिए। आने वाले दिनों में स्टूडेंट्स को हम एनकरेज करेंगे, और एनकरेज का ये भी एक फैक्टर है जो मैं आज आपके सामने बात कर रहा हूँ। This is also part of encouraging the students. So this will go across the institutions in Nagpur now in days to come. तो ऐसे स्थिति में आपको एनरोल करना बहुत जरूरी हो गया है आने वाले दिनों में स्वयं के पोर्टल पे, और ये इंश्योर करेंगे हम कि आपका लर्निंग स्टॉप नहीं होगा। तो स्टूडेंट्स, कहने का मतलब ये है कि जब यूजीसी ने ये कहा है रेगुलेशंस के तहत, तो डेफिनेटली हर विद्यापीठ को ये मानना ही पड़ता है, और मानने की वजह से दे हैव टू accept it, proceed for it and to implement it. अब जब implementation की हम जब बात करते हैं तो एकदम से कोई भी चीज नहीं हो सकती है, but we need to be very active. Second slides के हिसाब से we need to be very active, taking things into the consideration. जैसा कि UGC कह रहा है कि there are links, काफी links हैं, आप देख सकते हैं कि there are links, shared links of ICT initiatives by MHRD. MHRD was a former name of Ministry of Education. Recently, उसका नाम change हो गया है, Ministry of Education. Now, UGC को include किया है मुख्य courses जो इस platform के courses के माध्यम से to make optimum use of Swayam online platform for the benefit of the students learners. तो ये जो हम जो स्टूडेंट्स हैं या फिर जो भी लर्नर्स, बाकी स्टूडेंट्स जो बाकी लोग भी हैं जो पढ़ना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं, स्किल्स को देना चाहते हैं, और अडॉप्टिंग इट दे हैव added 83 UG courses, 40 courses which are already on the platform offered by them. It is ready, I can say, from July, October, September. अभी हम we just on this website. I'm taking you to the Swayam government EAC. अपना माइक बंद, अपना माइक बंद। Hello, is there any problem? There was echo, now it's all. It's okay. It's okay. तो जो कोर्सेज डिजाइन किए हैं स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी ने, वो कोर्सेज को यदि हम बात करते हैं कि उसको एक्सेप्ट करना है, पर वो कोर्सेज को हमें देखना पड़ेगा, वो कोर्सेज कौन से हैं, वो कोर्सेज हमें यूजफुल है कि नहीं, और उसमें से कौन से कोर्सेज हमें लेना है वो हमें चुनना पड़ेगा। उसके लिए हमें उस पोर्टल पे जाके, स्वयं के पोर्टल पे जाके वो कोर्सेज हमें देखने हैं। तो वो है यूजी लेवल के 83 कोर्सेज, पीजी 40 कोर्सेज। एक लिस्ट जैसे कि मैंने आपको एक आगे हम बताते हैं आपको स्वयं के जो कोर्सेस है वो कैसे अप्रूव होंगे, उसकी प्रोसेस है। उसकी प्रोसेस के लिए यूजीसी के रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ेगा, दैट हैज टू बी अडॉप्टेड, और रिकमेंडेशंस लेना पड़ेगा डीन एकेडमिक्स से या फिर हेड ऑफ द डिपार्टमेंट जो भी होंगे, क्योंकि क्रेडिट ट्रांसफर करना है और ऑथराइज्ड उसको करवा के एकेडमिक काउंसिल से उसको अप्रूव करना पड़ेगा, जो भी पेरेंट यूनिवर्सिटी है, जो भी जगह पे है। फॉर एग्जाम्पल अपना यूनिवर्सिटी राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज है, उसके माध्यम से
हमें ये सारी प्रोसेस करनी पड़ेगी टू गेट द अप्रूवल फॉर दिस कोर्स, whatever we are going to conduct or whatever we are going to have according to जो गरज है हमें उस चीज को रहने के लिए, रखने के लिए, वो इंस्टीट्यूशंस और विद्यार्थी के ऊपर से डिपेंड करेगा। आपके यहाँ पे काफी पीजी कोर्सेज भी है, मैंने देखा, जहाँ पे सॉरी यूजी कोर्सेज में मैंने देखा कि बीबीए भी है, बीकॉम इंग्लिश मराठी मीडियम है, उधर एमकॉम है। तो आपके यहाँ पे एमकॉम एमए भी है, जैसे कि पॉलिटिकल साइंस ग्रांटेड है आपके यहाँ पे, एमकॉम मराठी इंग्लिश मीडियम है, फिर एमए उधर मराठी और इंग्लिश है। तो पीजी कोर्सेज भी काफी आपके यहाँ पे, इट्स क्वाइट रिच prospectus you people are having for the students to have it। और फिर बीकॉम के दोनों मीडियम्स के स्टूडेंट्स आपके पास है, तो डेफिनेटली आपको बेनिफिट होगा इन प्लेटफॉर्म को यदि आप यूज करोगे। बट देयर इज अ प्रोसेस, दैट प्रोसेस हैज टू बी फॉलोड। तो ये जब हम इनिशिएटिव की बात करते हैं, जो कि मैंने स्टार्टिंग में आपको यूजीसी का वेबसाइट दिखाया और वहां पे हमने देखा कि स्वयं के बारे में आपको विंडो दिया गया था। देन देयर वाज अनदर विंडो, इट वाज यूजीसी बुक्स, जो अपन बात करते हैं वर्टिकल जो कोर्सेस है। बाद में आता है ई पाठशाला स्टूडेंट्स, और बाद में आता है स्वयं प्रभा। तो ये 4 चीजें हैं जो इस डिजिटल इनिशिएटिव के हमें डिजिटल इनिशिएटिव से फायदा दिलवाएंगे। तो जैसे कि डिजिटल इनिशिएटिव की मैं जब बात करता हूँ, स्वयं है, ई पाठशाला है, एंड ई पाठशाला इज रिलेटेड टू ऑल पीजी कोर्सेस। और नेक्स्ट है स्वयं प्रभा। स्वयं प्रभा पे हम आएंगे, हम बताते हैं, पहले हम बात करते हैं स्वयं की। अब अप्रूव्स द कोर्स ऑन ऑफर, जो भी आप कोर्स को मांगना चाहते हैं उसको अप्रूवल रहेगा, फिर उस कोर्स को आपको पब्लिकाइज करना पड़ेगा, नए कोर्सेस आएंगे, ये सारी चीजें उसकी है। डीटीएच जो है, डीटीएच डायरेक्ट टू होम कहा जाता है चैनल्स, जिसको हम स्वयं प्रभा के माध्यम से जानेंगे। द नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी नॉट रिलेटेड टू अस, बट it is useful for teachers too. Then this is depository, we all teachers know, we colleagues know, and these are the another digital initiatives by the government of India. Digital, smart, clean, these are all here. Then हम अभी स्वयं जो particularly जो topic है उसके ऊपर हम आगे बढ़ते हैं। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में कह दिया था, study webs of active learning for young aspiring minds, ये उसका वेबसाइट है स्टूडेंट्स। इस वेबसाइट को we can directly go and check the details on this. Now this is about in detail. Objective of this is to take best teaching learning resources to all. यहाँ पे पहले ही इसमें कहा गया है, यूजीसी का ये कहना है by their regulations कि this is the only platform where teaching learning resources can be given to all, including the most disadvantaged people. जो इससे दूर है, बोलेंगे सर मेरे पास तो मोबाइल नहीं है, मेरे पास रिचार्ज नहीं है, हाउ आई एम गोइंग टू डू ऑल दिस थिंग्स। सो फॉर देम आल्सो देयर इज अ सॉल्यूशन। उसके लिए हम बाद में आते हैं, नेक्स्ट स्लाइड्स में है उसके ऊपर। तो ये जो स्वयं है, ये क्या करता है, ये जो गैप है वो ब्रिज के माध्यम से भरने की कोशिश कर रहा है। डिजिटल डिवाइड इसे कहेंगे स्टूडेंट्स के, जो अभी तक बच्चे, ऐसे बच्चे जो अनटच्ड है इन सारी चीजों से, उसको वो इस जो रेवोल्यूशन है, डिजिटल रेवोल्यूशन है, वो अभी तक इस स्ट्रीम में न आए, ऐसे स्टूडेंट्स को लाने की स्वयं प्लेटफॉर्म के द्वारा कोशिश पूरी है। इट इज एम टू प्रमोट लाइफ लॉन्ग लर्नर्स। लाइफ लॉन्ग लर्निंग नेवर स्टॉप्स। एट दिस एज ऑल्सो आई विश दैट आई शुड डू सम कोर्स एट दिस एज ऑल्सो, आई एम सेइंग। सो ऐसे स्टूडेंट्स हैं या फिर और बाकी लोग भी है, दे इट्स अ लाइफ लॉन्ग लर्निंग प्रोसेस फॉर ऑल ऑफ अस। फिर वो स्टूडेंट्स रहे, टीचर्स रहे, रिसर्चर्स, जो रिसर्चर्स भी हैं टू यूज मल्टीमीडिया, जो यूज करते हैं मल्टीमीडिया, उनके भी काम है। फिर वो कैसे करें, कहीं से भी करें, एनी टाइम एनीवेयर, टू गेट द नॉलेज एंड द स्किल। व्हाट स्वयं ऑफर्स? स्वयं ऑफर्स वन स्टॉप वेब एंड मोबाइल बेस्ड इंटरैक्टिव ई कंटेंट फॉर ऑल कोर्सेज फ्रॉम हाई स्कूल टू यूनिवर्सिटी लेवल, यानी क्लास 9 से लेके तो यूनिवर्सिटी लेवल तक के ई कंटेंट हमको प्रोवाइड करता है। हाई क्वालिटी लर्निंग एक्सपीरियंस, peers, mentors वहाँ बैठे हैं, जिनके माध्यम से एनी टाइम एनीवेयर यू कैन गो फॉर द वीडियोस, यू कैन चेक देम, द ई कंटेंट दे अलाउ फॉर इजी एक्सेस, एंड इवन you can get the certifications from it, but authorized certifications, जो अभी हमने बात की थी थोड़ी देर के लिए। अब इस चीजों को डिलीवर करने के लिए स्टूडेंट्स के लिए दे
they have added a quality of classrooms, which is a mixture of model of delivery. That therefore, the Swayam another initiatives जो आप देखेंगे आप, now you can see this short diagram. This can be easily understood. Digital platform which gives open access to information, education and learning anywhere, anytime, everyone, empowering students of this country. So this is the objective, and this is an initiative taken by the government of India through this Swayam platform. My dear students, ये रहा हमारा पहला digital platform which gives open access to information, education and learning to anywhere, anytime, everyone, for everyone, empowering students of this country, of course. Now, 20% of credit weightage for students obtaining the course on the SWAYAM. 20% का उनको weightage रहेगा. Third part है access to the best of knowledge, best of teachers. Best of knowledge, best of skill based, I can say. Earlier there was a scheme of UGC that was called as Kaushal something. I'm not getting right now. It was something in the UGC 13th plan. It was knowledge something acquisition वगैरह था, जिसमें से भी एक कोशिश थी, और उसके बाद फिर वो वीवो कोर्सेस आए, Bachelor of Vocational Courses. So then here is now 989 countries being offered by 8 national coordinators and 18,46,098 enrollment of this platforms. So students, this is what it is. 50 MOOCs of UGC are being offered on the Swayam. Now, 4 quadrant approach है यहाँ पे. 4 quadrant approach की जब हम बात करते हैं, you can see on the screen of yours, left side, then left and then right. Quadrant number 1, quadrant number 2, quadrant number 3, and quadrant number 4. Quadrant number 1 relates to the tutorial. Quadrant number 2 relates to e-content. Quadrant number 3 relates to web source resources, and quadrant number 4 is self-assessment. So now in this quadrant number 1, मैंने जैसे कि पहले भी कहा था आपको, it contains video, audio, content of organized form, animation, video demonstrations, virtual and other things, which comes under this quadrant 1. Quadrant 2, which shall contain PDF, text, ebooks, illustrations, videos, demonstrations, documents, and interactive stimulations, whether it is required. Then quadrant number 3, web resources. यहाँ पे list है, you can see here. Related links, Wikipedia है, बाकी open source content है, internet base पे, वो सारी चीजें यहाँ पे links के द्वारा आपको मिलेंगी. Quadrant number 3. Quadrant number 4, which shall contain problems and solution of which could be in the form of multiple choice question. MCQs काफी common हो गया. Now students have understood this because of this situation, what students have felt, and they have known to all these things also. Earlier students may not be knowing of, particularly some stream students I'm talking about, not of the commerce, because commerce students are a little bit having the, of course arts भी है, but some students, those who don't know about this MCQs जैसे हम बोलते हैं, multiple choice questions भी है, then fill the blank shots, ये सब practice अभी आप अभी कर भी रहे हो इस pandemic situation में, जो कि teachers लोग आपको आपके मोबाइल पे और यूनिवर्सिटी उनके पोर्टल के द्वारा आपको एग्जामिनेशन कंडक्ट करके, दिस इज व्हाट इट इज. It will be the same process of quizzes and assignments, then solution and discussions for the topics of other things will be in this fourth quadrant. Now, duration. The duration of 4 quadrant course may have overall duration of about 20 hours of video lectures and reading module. So this particularly relates to the teacher who would like to go for having this module to make. So it will be of 20 hours of video lectures and reading module. Then comes how it is going to be done. So it will be a type of sort of the what we say EOI, expression of interest. Expression of interest, students, it relates to the thing that it is a call from UGC, of course, Swayam platform. They give the call for the teachers to enter into their initiatives for making the course design, so that they may apply for the design course they wish to go for. So there is a list also, students. UGC invites proposals for online courses through express of interest, जैसे कि टेंडर निकलता है या
कोई चीज आती है और उसके बाद ही आगे की प्रोसेस होती है. तो दिस इज व्हाट इट इज. द ऑनलाइन कोर्स आर शॉर्टलिस्टेड, whichever after that the courses are shortlisted. The online learning courses are made available on the Swayam platform by PI. PI means Principal Investigator, identified by the National MOOCs Coordinator through the post institution as per the schedule finalized by him or her. नोडल ऑफिसर हर कॉलेज में एक नोडल ऑफिसर रहेगा, दो who will be looking after all this Swayam platform skill based courses, and there is a process, I said. So this is the what we can say, the letter of expression of interest for developing MOOC. This I am showing you to have the knowledge. I'll just share you the letter of UGC for calling for expression of interest. This is here. Course coordinators, those who will go for it. I think is it visible on the screen? Yes, it is. So see here, you can find this expression of interest for developing the MOOC courses. So here they go for it, and likewise they call for this. The details of course are available below. So accordingly, humanities, social sciences, science and performing arts and other, they give the subjects, and accordingly we have to apply for this, those who are interested. But there is something like, so before proceeding for this, we need to have an academic faculty having 10 years of PG teaching experiences in concerned field can be a course coordinator. 10 years experience is required. For faculty employed in university college, required to submit a detailed proposal. These are the things they have given. So from this courses only it goes like. And now there is no recent call for this, this is called an expression of interest that is yet to. So it will be sort of like this. This is a sample I'm just giving you to know for it. But there are some terms and conditions that has to be looked for it, because once you go into it, we have to be first get ready for gearing up for this process. We need to go to give the area which you are going to have, it should be of international standards, along with the sample video we have to give of 5 minutes YouTube recorded and all. There are some things they ask for. So moving further, then this is what I was telling, where the site was not working. Now I am directly going to take you to the Swayam. This is the website, swayam.gov.in. My dear students, you can see this. There is an animation by Dr. Abhishek Kumar. This is consortia. Then this is academic writing, access to justice. It all relates to the subject wise courses यहाँ पे upload किए गए हैं. यहाँ पे you need to go with the filters and check what course you want to go. And this is the website of swayam.gov.cac. आप देख रहे हैं यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है. अपन ये अपना जो बेसिक सब्जेक्ट है उसके ऊपर चलते हैं. बीए या फिर कॉमर्स या फिर साइंस वाले सब्जेक्ट है, आपके पास पीजी भी है. तो let us a little bit move. You can find consumer behavior, business statistics, business research methods, which are related to the subject which you people are already having in your college. A good number of courses you people already have. Then we'll see little bit digital marketing is also there, digital library is there, which relates to the library. Then again, one environmental study is there, environmental psychology is there. There are many other that you people can directly click to this and listen to the there is like 15 weeks lecture, then 14 weeks starts date is also already given. You people can have a look over this. It is written 26 July 2021. Enrollment ends 31st August 2021. My dear students, you can see यदि आप कोई कोर्स करना चाहते हो, फॉर एग्जांपल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, ये कोर्स किसी को करके रखना है, तो देन ही हैज टू, या फिर हम एक मिनट, हिस्ट्री ऑफ उर्दू लैंग्वेज एंड लिटरेचर, मेरे ख्याल से आपके कॉलेज में उर्दू लैंग्वेज लिटरेचर कोर्स है, अंदाज है ऐसा. तो यहाँ पे हम देखते हैं 6 वीक्स का दिखा रहा है. इसका स्टार्ट डेट है 16 अगस्त को, यानी कि अभी जून चल रहा है, अगस्त 16 अगस्त को कोर्स स्टार्ट होगा. एनरोलमेंट 31 अगस्त को खत्म हो जाएगा. अब ये कोर्स कहाँ से होगा? श्रीनगर से ही ये कोर्स को डिजाइन किया गया, डॉक्टर शाह फैसल खान. तो ये कोर्स यदि किसी को लगता है तो वन कैन गो फॉर दिस कोर्स डायरेक्टली देयर टू गेट द स्किल, अदर स्किल along with the degree.
Now this it is there, Indian political thought. Then again 1 and 2 is already there over. Indian writing, this relate to the literature. Then again there are some other courses also which you people can look here over. Then there is a political theory, sociology, and many more are there. There is a list. I have already having this list also. I'll definitely show you in next slides when it is coming to that point. Now here also there again you can find this proficiency in course in Spanish, Russian, French. These are the language. This also students you can go. These are all 12 weeks courses. यदि आप ये फ्रेंच कोर्स करना चाहते हैं, रशियन कोर्स करना चाहते हैं, स्पेनिश कोर्स करना चाहते हैं, these are all 12 weeks course. और इसका जो enrollment amount it's not higher, that is lower only. It's not much like if students may be thinking this is बहुत ज़्यादा होगा, not like this. It's minimum only. So this is what I wanted to tell you about Swayam. Sorry. .government.in. Now you can even directly go and check at your laptop PCs for knowing the courses also. Further we are moving. Now there is a recent, why I have startingly said that here is the only college who have initiated this to go for this. 28 May, it is quite recent date, and students you can see आपके कॉलेज ने स्वयं का जो शुरू किया है या फिर उसके बारे में अवेयरनेस आप लोगों के बीच में देने का किया है। उसके पहले 28 मई को ही यूजीसी ने लेटर जारी किया है और इसमें बोला गया है कि we need to promote this among the students. Let students know, colleagues know, teachers know that now the day has come because of the second wave and first wave का experience अपने को रहा है कि pandemic situation में किस तरीके से we all suffered and there was no alternative to go the learning on the gadgets, device, online learning only. So this is the what the regulation is. Now moving to the what it has notified. It has notified to all the registrars of the institutions 1 June and 1st of November, 1st of June and 1st of November. Every year it comes like on learning courses going to be offered in forthcoming semester. जैसा कि मैंने अभी आपको उदाहरण दिया था यूनिवर्सिटी के लेटर के द्वारा 25 तारीख को जो लेटर जारी किया गया था और बीच में ही हमने अभी स्वयं का वेबसाइट देख के उसको आगे भी देखा कि कोर्सेस ऑलरेडी अपलोड हो गए हैं, उनके मॉड्यूल्स उनके मॉड्यूल्स ऑलरेडी रेडी हैं, 6 वीक्स के भी हैं, आप लोग कुछ कोर्स भी एक्स्ट्रा करना चाहते हो. So this is what it is, but before that it is ready with the platform. So all the institutions shall within 4 weeks from the date of the notification by Swayam considered through their competent authority. Competent authority means the principal of the college, the online learning course being offered to the Swayam platform and keeping in view their academic requirement, decide upon the course which it shall permit for the credit transfer. So there is a process I have already told. Now the credit transfer in academics कैसा होगा? So for the credit transfer of money from one account to another, also called a wire transfer. This is what it is. Now the procedure of granting credit to students and studies is another school also called transfer credit. So it is all related for the transferring of these courses like semester through online learning courses. कैसा होगा? Provide कैसा होगा? स्वयं platform के माध्यम से. It is a competent authority. Now when we should go for it. So by making the decision, academic council may consider allow online courses of Swayam. It means that the recommendations or the proposal for the approval of this course has to be sent to the university, parent university, Rashtra Technology University to get an approval. Then the things required is non-availability of suitable teaching staff for running the course, facility of offering the elective papers, and these things also comes with moving further. Every student in the class of the institutions offering particular paper course that has to be by the particular college according to their requirement. But these facilities and these things should be there work. Like physical facilities, no doubt it is already known by the institutions, those who are running, and it is nowadays it has become a compulsory part, and there are good institutions in Nagpur and they are already having all the basic facilities, of course. So while doing all this, थोड़ा सा one can think कि भाई इतना सब कुछ करना है पर कैसा होगा, but क्या होता है, there is no substitute for hard work.
हार्ड वर्क किए बगैर वी कैन नॉट मूव। तो स्टूडेंट्स एक बात ख्याल में रखना है कि थोड़ा सा तो हार्ड वर्क करना पड़ेगा। ये सब होने के बाद सर्टिफिकेशन की बात आती है। सर्टिफिकेशन की बात है नहीं, इवैल्यूएशन होगा क्या, सर्टिफिकेशन हो गया क्या। तो लेट अस गो फॉर फर्दर। देखिए प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर का रोल क्या रहेगा। जैसे कि पीआई अपॉइंट किया जाएगा, द होस्ट इंस्टीट्यूशन, जो भी इंस्टीट्यूशन है वो पीआई शैल बी रिस्पांसिबल फॉर evaluating the students registered for the MOOC course launched by him or her. Whereas online examination would be preferred mode. Online examination preferred mode ही रहेगा, no issue. Shall authorize to decide the mode of conducting the final examination, which is up to the competent authority to decide according to the arrangements and the settings of the college and the students as it goes. This shall be announced in the overview of the course at the time of offering the course. In case pen and paper final examination is means going for the mutual examinations is also there to be conducted. The same shall be offered to any college volunteering to conduct the same. So exams can be conducted from this college to that college depending upon the decision of the respective PI and other things. Now, further moving to this. So this is a list which I wanted to show you here over. I guess it is visible, all of you. This is a list of consortia for educational communication, CEC की जो हम बात कर रहे थे students, consortia for educational resources, consortia for educational communication. So it's a big list, and here I think it is 66 हमने जो starting में आपको बताया था. Now here it's quite in small things, but I'll read out for you people. Like यहाँ पे हम देख रहे हैं कि any course like in humanities and मैं ये लेता हूँ ह्यूमैनिटीज एंड आर्ट, इसका लेवल बता रहा है बीए, सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस एंड सब्जेक्ट का नाम है कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट एंड डेमोक्रेसी इन इंडिया। अमिताभ रॉय का कोर्स है, एक्स फैकल्टी है, गुरुदास कॉलेज कोलकाता से है। 5 जुलाई 2021 से ये कोर्स स्टार्ट होगा और 20 अगस्त 2021 को खत्म हो जाएगा। 13 और 14 नवंबर इसका एनरोलमेंट है और ये है सेंट जेवियर कॉलेज ऑटोनॉमस कॉलेज। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स की यूजीसी ने जो लिस्ट डिक्लेयर की है, सीरियल नंबर 1 डिसिप्लिन यानी ह्यूमैनिटीज एंड आर्ट, डिग्री प्रोग्राम बीए, बीएससी, बीकॉम। सो हियर सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस, पोस्ट टाइटल है एडमिनिस्ट्रेशन एंड पब्लिक पॉलिसी कंसेप्ट्स एंड थियरीज। यहाँ पे नेम ऑफ द कोर्स कोऑर्डिनेटर इश्ता सुर, डेसिग्नेशन असिस्टेंट प्रोफेसर है। एफिलिएटिंग इंस्टीट्यूशन बता रहे हैं स्कॉटिश चर्च कॉलेज कलकत्ता। देन स्टार्ट डेट है 5 जुलाई ऑफ 2021 एंड एंड डेट है 20 अगस्त 2021। टेंटेटिव एग्जाम डेट बता रहा है 13 to 14 नवंबर 2021 और पोस्ट यूनिवर्सिटी है सेंट जेवियर कॉलेज ऑटोनॉमस जो है। नंबर ऑफ क्रेडिट ऑफ द कोर्स 2, ये है कोर्स का यूआरएल। सो दिस for this, if you go for clicking on this, the further process starts. Depending upon the choice of the students are selecting for the post, by looking into this list, the students can think of there are 66 courses I have just told you by the notified by the UGC recently, and that letter has been posted and I have shown you also. So now moving to the another, we just select some other course like here it is language, since I belong to the same faculty discipline. यहाँ आप देख सकते हैं language में यहाँ पे आप स्टूडेंट देखेंगे डिग्री प्रोग्राम बोल रहा है BA, सब्जेक्ट है इंग्लिश और यूनिवर्सिटी का कोर्स है लिटरेरी एंड कल्चर थियरी। यहाँ पे जो है डॉक्टर जोसेफ है, एसोसिएट प्रोफेसर है, ये है केरला से, प्रोफेसर केरला। सो दीज आर द डेट्स गिवन यू ओवर एंड दिस इज द टेंटेटिव एग्जाम डेट, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिकट। सो फ्रॉम नागपुर वन कैन avail the Swayam platform of these kind of things and directly enroll to this course. आगे बढ़े, there is a course another on serial number 10, management and commerce, BBA BCom. So in this there is a course called as management studies, business research methods. Title है Dr. Parameshwari, assistant professor, PES College of Science, Arts and Commerce, Madhya. Yeah, and date is here already given and other things remain the same, but University of Mysore. Now let us check if anybody is from Nagpur or what. Somewhere I have not find it. Watching it. Let us see whether we can have a person from Nagpur for our knowledge. No, it is already giving the signal.
not there. Nagpur is not there. So, okay, fine. So there is no one from Nagpur yet started, but there is a person from DAVV, Devi Ahilya Vishwavidyalaya Indore. Multidisciplinary course है, BSc BA BCom students के लिए foundation course है, environmental studies के ऊपर. Now those who wish to go for environmental studies students, there is a course called as environmental studies by Monica Jain, and she is a professor and head the department of this environmental studies. Maharaja Ranjit Singh College of Professional Sciences, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय affiliated होगा. ये बाकी dates दिए हैं, and DAVV Indore means देवी अहिल्या विश्वविद्यालय Indore. So this is one nearest to means. We were just checking whether people have started from Nagpur, and it is yet to, but definitely in days to come you will find the people from Nagpur also whose name may be coming up in this list. Now again we'll see some of people are from Mysore and then other things are there, but in spite of this I can find out that there are courses BA BCom. Here it is economics. We'll look into this. Management and Commerce BCom, Economics, Microeconomics, and here Dr. Mansi is there, and these are the dates and other things, students. You people know this. Now I'll just click on this. Let us see what comes out. No, it is not. So next time it will be. So now another is Humanities and Art BSc Home Science. So BSc Home Science students means it is we need to also think of the BSc students. So here it is showing BSc Home Science, Children with Developmental Challenges by Mrs. Kiran. She's a scientist, professor. This name is not can be seen, but it's something Jayashankar Agriculture College, and these are the dates. So there are many other courses like electronics foundation course, and this and that is already there. Food technology, कॉमर्स, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ पे मैनेजमेंट स्टडीज में बोल रहे हैं, फंडामेंटल्स ऑफ ऑफिस मैनेजमेंट एंड मेथड्स, जनरल बायोलॉजी है, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया है, ज्योग्राफी ऑफ टूरिज्म जो अभी मैंने आपको जस्ट आई हैव शोड यू ऑन द वेबसाइट. देन अगेन फर्दर सम कोर्सेज में भी देयर वेयर स्टूडेंट्स विश टू हैव, देखो इंट्रोडक्शन टू एडवर्टाइजिंग, दिस इज व्हाट आई वांट टू टेल यू. मैं इंटरेस्टेड कोर्स स्टूडेंट्स बीबीए बीए जेनरिक है, सॉरी इंट्रोडक्शन टू एडवर्टाइजिंग, ललित इंगल करके फुल टाइम गेस्ट फैकल्टी है, and it is from Indore, nearest one, and these are the dates, but we did not have to go for the nearest and all. I am just telling you the closer state of ours, DAVV Indore. So here again there is a link, but I don't find it will let us try whether it can give a link also for no it is yet to, but these courses can be find directly students there in the portal when we go there. Right now here when we see this, like there's a problem now. So we were at how it can be done, and the competent authority approves for it to decide the courses for it. Now this we have already covered. Here we were, and now further we have to think whether not easily the things can be done, but it has to. We have to work hard for this. So this is of certification. So principal investigator has to think about all this for his role. Then after conducting the examination completion of the evaluation, the principal investigator host institutions will award the grade and the marks for this. Through the evaluation scheme, they will definitely announce within 4 weeks. Now the parent institutions are incorporate marks and grade obtained by the students as communicated by the host institution through the PI. PI means principal investigator of the Swayam course of the mark sheet of the student that counts for final award of the degree diploma by the university. So it will be definitely merged students for getting the final award of his or him or her degree. So now the TPR means theory practical results. So it will depend upon the lab component, or it will depend upon the parent institutions whether the students is going for lab and practical upon that depends. A certificate regarding successful completion of MOOCs course shall be assigned by the principal investigator and issued through the host institution and sent to the parent institution. So further, credit mobility of MOOCs, it's not much to be looked into it for the things, but still I am covering it in these things. But important thing which it is that no university shall refuse any students to credit mobility of the courses. So that has the UGC has in the regulations as then
that there will not be as such that there should not be any sort of differences of students credit mobility. It will have the vertical entry and exist like in Kaushal. I have said it was earlier. So this is step-by-step procedures to be adopted. There are 8 steps to be adopted by the university for adopting MOOCs on Swayam. So first step is making amendments. University, though they're a competent authority, depends upon the management council, academic council, board of studies, should make amendments in the ordinances, rules and regulations as per the UGC's, since the UGC has authorized for this. The second steps comes like the selecting the courses. When we talk about and selecting the courses, students, then it is like to be permitted certain credit transfer through Swayam. For example, when the faculty is not available, elective courses for supplementing teaching learning process while ensuring that physical facility should be there. So it is not with the institution of yours. Then the third stage comes of designate course coordinator, of course, nodal officer, what I have already told you. Then fourth step of disseminating information widely through the webs and all, conducting student forum, telling them faculty members, notice boards. These are all common parts. So course registration will be same like but this has to be amended by the university parental university to go with this all. Then step 6 is evaluation and step 7 is marks of the students. Then it goes for the certificate. So apart from this, the basic thing of like the July 18 July 2018, 18 July 2018 has already notified by the UGC's regulation for the teachers category that these courses of Swayam online and all will be counted for their further caste promotion. How it has been inclusion of MOOCs and PAPAS and API for university teachers as well college teachers. For university teachers, it is already given you for students. I mean, teachers, one we can see here like published research papers, and this is a common thing. Any of the following completed research, methodology course, workshop, syllabus, whatever. The faculty development program, at least 1 week, 5 days duration, or taken one MOOC course with an e-certification, development of e-contents in 4 quadrants. Now here, this is 4 quadrants we are talking about MOOCs course during the assessment period. So this is for entry for the assistant professor, and moving to the senior scale, one has to go for the MOOC courses or 4 quadrants, or they may have the choice for other courses too. But it will be in days to come as a mandatory part for doing this. Now, once we see from assistant professor senior scale to assistant professor selection grade, then again it is already given here that one course in the relevant subject, like expression of interest. I have already told you about the UGC circular from last 2017. It has not called for expressions of interest. My colleagues, now we can see that at least 10 modules of MOOC courses, contribution towards the conduct of MOOC courses during the period of assessment is required, or there is an options also one may offer. But in days to come, we have to do. It's quite hectic, but in hard work leads to the success. Further, moving to further, next slide, like CAS for college teachers. Now college teacher, we the affiliated teachers, like we talk about affiliated one. Assistant professor 10, again moving to the assistant professor 11. There is the same thing like for certification course, MOOCs course in 4 quadrants. It is like e-contents in 4 quadrants. 4 quadrant means, which I have already told you about, quadrant 1, quadrant 2 video, and then text of PDF and other things I've already told you about it. Moving from assistant professor to associate professor, but in selection grade, when we see that there also it is contribution towards conducting of MOOC courses during the period of assessment. Then assistant professor selection grade to associate professor selection grade. Again, at least one quadrant is required among 4 quadrants, like contribution towards development of e-content in 4 quadrant, at least one quadrant, minimum of 10 modules. 10 modules of the course, contribution towards the development of 10 modules of MOOCs, contribution toward the conduct of MOOCs courses during the period of assessment. Period of assessment, we all know that. We do not have to explain it. Now, how this comes, everybody knows this. We'll skip this one.
This all it's already available for 4 quadrants. One can see you for developing e-content 5 and 1. It is depends upon the I mean the discipline. The columns are about discipline. It may be something engineering and here's humanities. Further, let us see for the vertical of Swayam. So here we'll move. We know the Professor Dr. Rekha Sharma. She's a mentor of UGC Swayam, and this is the dashboard of like once the teacher is registered as an what we say the mentor for Swayam mentor. Definitely he or she may have this kind of dashboard where one can see and this their details of these things. Now, what is this? This address to the problem of access, equity, quality. When we started our lecture, students, we saw that UGC by making this Swayam platform very easily accessible, there may not be any injustice to anyone. There is an equity in the course, and the quality they are giving by the addressing the good quality faculties and the rich kind of content to the students. The project would help the students and teachers to update their knowledge and skills, especially for those located in rural background and remote areas. This is very important. I'm repeating, students located in rural background, remote areas, and who are not the advantages of this part of this platform. The project would successfully bridge the digital divide and would help the nation move towards the information to become a rich society. Now, e-Pathshala, which is for PG courses. You people are already having PG courses as I told you earlier, that you people are running MCom, English, MA, Political Science, MA, again in Marathi, English, and MCom in both the mediums, I guess, if I'm not wrong. So this is the from e-Pathshala. There are e-text of 23,000 plus, videos of 23,000 plus, 5,000 experts are already there. There are quiz of 30,000 plus, and these are the subject papers. So it is already there on the e-Pathshala. One can move and further from this site. Also, it can be easily access to it. So this is what the e-Pathshala, e-PG Pathshala, I'm sorry. So this is now moving further. EPG Pathshala. EPG Pathshala, Electronic Postgraduate Pathshala. Developing e-content in 77 subjects, subject 60 papers, 4 core paper of each semester, 2 years course it is. So this is a short information, but we just go for the quadrant now, right now. In quadrant, it is saying each module comprises of e-text, self-learning, audio, video component, self-assessment question, learning mode, further references, materials on student. Now further, present status of e-PG Pathshala. Videos text available on e-PG Pathshala is 18,000. Visitors, again, there is further, there is more information on e-PG Pathshala. We can directly go and have it, but I have already shared you these things, Pathshala of the things, e-PG Pathshala website. You can directly click on that, and again, then we will have the last one, that is DTH, what we have taken into this. So this we have already covered, this part of it. Now we were on this part, Swayam mentor. This is the thing, this I have just given you the information. Now this is the present status, and these are the effect of analysis of EG Pathshala. This can be easily, have a look on this thing. So this is difference between e-content and MOOC is e-Pathshala is open educational resource, right? And here we can see that MOOC has a teacher-student groups where MOOC coordinated teacher interacts with the learner. A learner can earn certificate credit on successful completion of MOOC courses on Swayam. Now, as I was saying that कि सर हमारे पास तो मोबाइल नहीं है, मेरे पास इंटरनेट नहीं है, रिचार्ज नहीं है, मेरे को यूनिवर्सिटी का एग्जाम देना है, there is a problem and all this, sometimes it comes. So students, if there is no internet connection, no mobile network, solution क्या है? Solution क्या है? Yes, there is a solution, and that is free DTH channel of education. Free DTH channel of education यानी Swayam Prabha. DTH, I have already told you, direct to home. Direct to home, everybody has a
what is called as this dish antenna, and all people say like. So here we will find that it's satellite technology for taking high quality of education to the masses, where we find that there is no mobile, no internet connection, then they can go for this 32 DTH channels devoted to telecasting of high quality educational programs on 24 into 7 day basis using this GSAT 15 satellite. So this is a sort of information. We'll move further to the next slide. It covers engineering, science, humanities, commerce, and other courses too. It is in mathematics, physics, chemistry, biology. It assists classes from 11th and 12th students to prepare for competitive examinations like IIT, JEE. So, objective of direct to home for education equals equal access, school education, live classes, competitive examination preparation, curriculum-based courses, higher education. Now, these are the channel distribution. Like NPTEL has a 10, which includes engineering, science, technology. UGC CEC has non-technology UGPG programs. IGNU has a 4, diploma and certificates. IITPL, competitive exams preparation. NCERT, school programs. And NIOS, National Open School Job, Open Education. These are some students. How do I train myself? These are some this links I can share you later on also if anybody wants it. So there are further things also. We can go for the content development and for the delivery. We can just have a click. You can go for a presentation of other screencast or Matic and all. So nowadays, there again one letter has come up with the UGC about mixture of, blended learning that has now they have called upon the suggestion. In days to come, we have a blended learning. So these are some references which you can directly click on this and go for the look into the websites of Government of India. So we need to think, we need to act on it. Then only we can reach to this. But this is for the students. What I mean to say, that unless there is a will, there is a try, there is a want, and we can't do it. So simply saying that dedication, responsibility, education, attitude towards dream is not that. It is rightly said by Kevin Carroll that dedication, responsibility, education, attitude, motivation is the dream. And for this all, we require a smartness. Means smart होना बहुत जरूरी है. So I have just defined this, that smart means S stands for specific. We must be very specific. We must be measurable, achievable, realistic, and time bound. The thing should be time bound. So do not stop. You are tried. Stop when you are done. BC जनरली अरे मैं थक गया मैं भी रुकता हूँ, ऐसा नहीं बोलेंगे. हम कहेंगे don't stop when you are tired, stop when you are done. So I am done. I'll stop you over. Thank you so much. Thank you, sir. Over to you, madam. Thank you. Any queries from the audience? Any questions? As there is no query, we will move towards the last step of the program, that is vote of thanks. Sir, you very wonderfully explained all the facets of Swayam, what Swayam is, the cardinal principles of Swayam, various courses offered through this platform, how to enroll, how to take the exam, how to acquire the degree. Along with Swayam, sir is also very beautifully told about EPG Pathshala and Swayam Prabha channels. On behalf of SBCT College, I express my sincere gratitude to Raut sir who take out time from his busy schedule. I am also thankful to Principal Dr. Mehta sir who provided this platform to conduct this program. I offer my sincere thanks to Dr. Pranjali Kane, Dr. Narendra Tate, and Mrs. Mona Chandak. And with this, I declare that this program is concluded. The participants can leave now. Thank you, sir. Thank you.